The Supreme Court has reserved its order on a plea seeking stay on its August 11th directive to round up stray dogs in Delhi-NCR. Coming down hard on civic bodies in the National Capital Region, the Apex Court criticized local authorities for their inaction, which it said had worsened this issue. The top court added that everyone who has filed an intervention will have to take responsibility. And during the hearing, the Solicitor General of India, Tushar Mehta, highlighted that 37 lakh annual dog bite cases nationwide. That is the number. However, animal rights groups represented by senior advocates Kapil Sibbal and others argued that the order was impractical due to insufficient shelter facilities and potential harm to dogs. The court's August 11th ruling mandated capturing 5,000 strays, sterilizing them and housing them in monitored shelters within 6 to 8 weeks. The order had sparked national outrage and protests, with activists, celebrities and even politicians speaking out against what they termed was an inhumane directive. Joining me on the show tonight, Dr. Sanjeev Bagai is a chairman and MD of Nephron Clinic, and senior leader of the BJP, Vijay Goel, joins us. We'll be joined by Urvashi in just a bit as well. But Vijay Goel, coming to you, which side of the debate are you on? विजय जी, आवाज नहीं आ रही जी, अब आ रही है विजय जी? जी बताइए, इस डिबेट की किस तरफ आ रही है? अब जाहिर तौर पे मैं पिछले 2 साल से स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम के ऊपर आंदोलन चला रहा था जी। तो मैं समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट, सभी कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जाए, वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। जनहित में भी है और पशु हित में भी है जी, दोनों के हित के अंदर ही है। बट विजय जी, मेरा सवाल ये भी होगा कि क्या ये आप जो बोल रहे हैं जनहित में है, लेकिन क्या इतनी तैयारी एमसीडी की है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए एक अच्छा जगह बनाया जा सके जहां पे उनको खाना मिले, अच्छी सुरक्षा रहे, ऐसा इंतजाम है क्या? मारिया, एक बात समझिए, आपको ये कुत्तों की समस्या क्या है ये आपको जानना चाहिए जी। हमारे देश के अंदर हम पहली रोटी गाय की निकालते थे और दूसरी कुत्तों की निकालते थे, पर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ गई। ये वैसा ही है जैसे पहले मल्टी डिजिट लॉटरी चलती थी, तो लॉटरी से लोगों को वो नहीं थी क्योंकि किसी किसी का प्राइज निकलता था, पर जब सिंगल डिजिट लॉटरी हो गई तो फिर हर दूसरे दिन प्राइज निकलने लग गया, तो सारा देश लॉटरी खेलने लग गया। सरकारी नौकरियों को छोड़ छोड़ के भी महिलाएं भी खेलने लग गई जी। उसके खिलाफ हमने आंदोलन चलाया। ऐसे ही पहले कुत्तों की संख्या इतनी नहीं थी, आज 12 करोड़ से ज़्यादा डॉग्स जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। अकेले दिल्ली में 8 से 10 लाख कुत्ते हैं, 20,000 कुत्ते रोज काट रहे हैं। जब वो रोज काट रहे हैं तो जो शेल्टर होम के अलावा कोई अल्टरनेटिव हो तो आपके पैनलिस्ट बता देंगे। ये लोग क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको शेल्टर होम में भेजा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर आप ऑर्डर देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जनहित यानी ह्यूमन का तो ऐसे ध्यान रखा है कि ताकि इन कुत्तों से उनको छुटकारा मिल जाए और ये लोग जो हैं ये शेल्टर के अंदर चले जाएं। और कुत्तों के लिए है कि उनकी अच्छी देखभाल होगी, उनकी फीडिंग होगी, उनकी स्टरलाइजेशन होगी, उनकी वैक्सीनेशन होगी। तो जो ये सो कॉल्ड डॉग लवर हैं, जिनको मैं नहीं मानता हूं क्योंकि ये सिर्फ डॉग लवर हैं, दे आर नॉट एनिमल लवर। और आप समझिए कि जो असली एनिमल लवर है वो मैं हूं, मैं वेजिटेरियन हूं। इनमें से बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, तो इसका मतलब है वो बाकी पशुओं के साथ तो क्रूरता कर सकते हैं, सिर्फ कुत्तों के लिए आ गए हैं। दूसरा मेरा सवाल है जो आप इनसे पूछना, अब ये कहते हैं इलाज क्या है इसका, तो भाई वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन अगर इलाज है, तब भी ये जो 10 लाख कुत्ते सड़कों पे घूमते रहेंगे, काटते रहेंगे, उसका क्या हल है इनको बताना पड़ेगा। जहां तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, तो कोविड के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, सरकार ने हॉस्पिटल्स बनाए, कैंप्स बनाए और वैक्सीन बनाई और टेम्परेरी हॉस्पिटल्स खड़े किए, सब कुछ सरकार ने किया। भूकंप आया, ये भी कंप भूकंप नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी चर्चा इसलिए नहीं हो रही थी
कि जितने भी एनिमल सेंटर चलाए जा रहे हैं या स्टरलाइजेशन का काम हो रहा है, वो यही लोग कर रहे हैं जो अपने आप को डॉग लवर करते हैं। अगर स्टरलाइजेशन का काम नहीं हुआ तो इनके कारण नहीं हुआ। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी के खिलाफ टिप्पणी की है तो इन लोगों से पूछिए इतने साल में आपने एमसीडी के खिलाफ एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये सब उन 20 सेंटर्स में हैं जो एमसीडी के अंडर स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम करते हैं, जो इन्होंने काम ठीक नहीं किया था। तो मेरा दोबारा सवाल यही है कि चाहे कोई भी आप स्कीम ले आए, पर उसमें अभी भी ये 10 लाख कुत्ते तो सड़कों पे घूमते रहेंगे, काटते रहेंगे। उनका ये क्या इलाज बताते हैं वो मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा। Okay. I can see Urvashi Prasad also joining us. She is a public health expert. But before that, Dr. Bagai, your thoughts on what has been said by the Solicitor General in particular in this case. And you know, when he says that no one hates animals, there are 4 poisonous species among 100. We don't keep them at home. And the government data actually is of 37 lakh dog bites cases. This is a huge problem and it cannot be just brushed under the carpet, sir. Good evening. I think few people's failures and incompetence cannot compromise the health and safety of an entire community. Let me be absolutely clear. Stray dogs, which are liable to bite a common person, be it a child, be it a specially abled or a disabled person, visually impaired person or elderlies, cannot live in the same environment. And that's the reason we are seeing 37 lakh dog bites a year. That's the reason it's almost 10,000 dog bites a day. Now, there's a lot of debate, very quickly to mention about, oh, the rabies figures are very low. Let me explain this. 36% of the global population of rabies patients exists in India. Even a single death which is of a preventable cause is condemnable. The issue is not just about rabies. It's about bacterial infections, and these dog bites carry more than 330 different types of bacteria, published literature. They carry infections which cause laceration wounds, nerve damage, orthopedic problems. They have crush injuries. It's scarring, permanent disfiguration, and so on. Look at the total cost of this medical treatment which the Indian healthcare system is bearing throughout the year. It's much more than building shelters. So prevention is better than cure. The dogs need to be housed in a specific location. I think the local civic authorities must be pulled up. And my simple question to the NGOs is, in the last 10 years or 15 years or 20 years, what have you all done? You all are getting funding, you all are getting money. Where is that money going? Because you've been unable to do it. Now we can't be compromised. This is impinging my right, a fundamental constitutional right, Article 21 of freedom to live, freedom to travel and to move without any fear. I cannot walk on the roads. I cannot go out at night. I can't send my children to the park. Children are getting bitten in the park. Elderlies are falling because of the dog bites. People are dying. It's not only rabies, it's other bacterial infections, orthopedic problems, plastic surgeries, reconstructive surgeries. People say, there was an activist who said a completely unscientific and a misleading statement on social media that just wash the wound with soap and you are free from rabies. Wrong. A dog bite carries 36 to 81% risk, published data, of rabies. Why are we allowing this to happen? Urvashi, as a public health expert, I'm looking at this point, which is perhaps going to be the headline in papers tomorrow, where Solicitor General Tushar Mehta says that in a democracy, there is one is the vocal majority and one who silently suffers. We have seen videos of people eating chicken, egg, etc., and then claiming to be animal lovers. It is an issue to be resolved. Children are dying. Sterilization does not stop rabies, even if immunized. So what really are the solutions here? Yeah, Marya, see, I think it's not even about whether you're a dog lover or you're not, but it is about A, what is scientific, B, what is actually possible and doable, and C, what is also humane. Because at the end of the day, we had Honorable Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat talking about how we need to protect the indigenous dogs that we have in India. So humanity towards
everyone. Every species is something that we've always upheld as a value amongst Indians. But even if I come to the scientific and the feasibility aspect, clearly there is no country, there is no place in the world where we have been able to control this problem without achieving sterilization and vaccination at scale. You can look at examples from various other countries, and nobody has been able to solve this by just picking up dogs and putting them in shelters. So the fact that we had to implement those ABC rules, and as the court says, there's no use just having rules if you cannot implement them. That is a failing of the civic authorities, and I don't think that civil society can replace the civic authorities' job. Civil society can complement, and the role of civil society should certainly be strictly monitored by these civic authorities if they are giving them funds for sterilization and vaccination and they feel that it's not being used in the right way. But the ultimate onus accountability has to be on the civic authorities to carry out something which we've known, which is evidence based, which is scientifically proven, and which has happened in various countries across the world. And lastly, I would just say on the feasibility that, when we are talking of these shelters and we are talking of this unrealistic timeline of 6 to 8 weeks, we all know how these shelters would be run. We all know that they will just become a hub for disease to spread. And ultimately, it will just be a case of all these dogs dying. So, in that case, you may as well just give an order for, mass culling of the dogs, because I think there's no point setting up shelters if you cannot maintain them, if you cannot run them, and if what you have proposed, even from a funding point of view, is totally impractical. So I'm happy that the Supreme Court today has re-looked at it, and they have got a larger bench of judges to look into this matter. And I do hope that solutions that we come up with, there is no doubt that we need solutions, but I just hope that these are, as I mentioned, scientific, these are practical, doable, and they are humane. Okay, okay. I have just enough time for विजय गोयल जी. विजय गोयल जी, आगे क्या होगा? जो सवाल उठाए गए हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, कुछ नहीं होगा, वो तो वैलिड है. हाँ, देखिए एक बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है, लोकल अथॉरिटीज को दिया है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, स्ट्रे डॉग्स को वहाँ पर रिलोकेट करिए, उनके खाने का ध्यान रखिए, सीसीटीवी कैमरे लगाइए, लोगों को रखिए, उनकी स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन का काम करिए. तो मैं नहीं समझता काम शुरू होने से पहले ये लोग डिस्करेज करना शुरू कर दें अथॉरिटीज़ को. ये काम नहीं हो सकता. हमारे देश ने और हमारी सरकारों ने बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं. पहली बात तो ये है. तो इसीलिए और उसके लिए जो फंडिंग की जरूरत होगी वो फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे लोग देंगे. सब लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देख रहे हैं और सुन रहे हैं. दूसरी बात ये है, जो ये इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, मैं इनसे आप एक प्रश्न पूछना, क्या अगर सारी फैसिलिटीज़ हों और शेल्टर होम बने हों और उनकी देखभाल ठीक हो रही हो, तो क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत होंगे? सब इनमें से एक भी सहमत नहीं होगा तब भी. तो इसका मतलब है ये प्रोटेस्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रीजनिंग के लिए रीजनिंग कर रहे हैं. इनका डॉग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है. इनके जो अपने एनजीओज हैं, एमसीडी ने इन्हीं के 20 एनजीओज हायर किए फॉर स्टरलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन. उन्होंने ठीक काम नहीं किया, पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई डॉग लवर ने, कोई डॉग इंस्टीट्यूशन ने, कोई एनिमल केयर सेंटर ने, कि एमसीडी ठीक काम नहीं कर रही है, हम नहीं करेंगे इसके साथ काम. सब 50 लोगों का स्टरलाइजेशन करके 500 रुपए का बिल लेते रहे ड्यू टू करप्शन. तो मेरा ये कहना है इसका हल अब एक ही है. पहला हल ये है, ये जितने भी डॉग लवर्स हैं, और मैं कहता हूं जनरल पब्लिक भी है, वो सब कुत्तों को गोद लेना शुरू करें जैसे नीदरलैंड के अंदर हुआ था. हम यूएस से अमेरिका, जर्मनी, जापान, सिंगापुर जाते हैं, हमें तो एक कुत्ता भी शहर में घूमता हुआ नहीं मिलता. तो इसका मतलब है उन्होंने मैनेज किए हैं और बाहर शेल्टर होम बन सकते हैं. तो पहले से ही इन रीजनिंग को करना कि भी शेल्टर होम नहीं बनेंगे, इनएडुकेट है, उसका मतलब तो सीधा सीधा एक हो गया कि भी आप किसी भी तरह से तैयार नहीं है और आप दूसरा रीजन देंगे. अभी आपने देखा होगा, एक डॉग लवर हैं अंबिका शुक्ला,
उन्होंने रेबिस के सपोर्ट के अंदर आर्गुमेंट देने शुरू कर दिए कि रेबिस का जो वायरस है ना, उसका स्लाइस जब तक खून से नहीं मिलेगा तब तक आपको रेबिस नहीं होगी। अरे कुत्ते के काटते ही खून निकल आता है जी, तो उसका क्यों नहीं मिलेगा वो, और मिलने के बाद रेबिस के अंदर आ जाएगा। फिर दूसरा कहते हैं रेबिस के केस कम है, तो आप रेबिस के केस ज्यादा का इंतजार करेंगे या पहले से इंतजाम करेंगे। 20,000 हर साल लोग कुत्ते से रेबिस से मरते हैं, और हमारा देश के अंदर 36% रेबिस है, और हमारा देश सबसे टॉप कंट्रीज में है रेबिस के मामले के अंदर। जबकि हमने कहा 2030 के अंदर हम एलिमिनेट कर देंगे रेबिस को। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, विरोध के लिए विरोध मत करिए, क्योंकि ये लोग को जो फीडिंग के लिए फंड मिलते हैं, फॉरेन फंडिंग होती है, हर एक एनजीओ को देख लेना, आपको फॉरेन फंडिंग मरेगी। उसके अंदर ये स्ट्रीट्स के ऊपर खाना खिला रहे हैं। इन्होंने आज तक एक भी शेल्टर होम डेवलप नहीं किया है जी, इन्होंने कोई शेल्टर होम नहीं डेवलप किया। ये कोई कुत्ते को अडॉप्ट नहीं कर रहे, ये अपने घर में कुत्ते को आने भी नहीं देंगे, सिर्फ पेट डॉग को आने देंगे, और सिर्फ गवर्नमेंट को कोसेंगे। तो ये कुत्ते हो गए गवर्नमेंट के, इनके तो कुत्ते हुए नहीं। तो गवर्नमेंट इनको जैसा निर्देश मिला है वैसे इनको मैनेज करेगी, पहले से डरने की जरूरत नहीं है। कोविड को जब हमने मैनेज कर लिया तो ये एक एक का शेल्टर करेंगे। लास्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अगर मान लीजिए 8 हफ्तों के अंदर उन्होंने सारे कुत्ते शिफ्ट करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा 5,000 डॉग्स का एक शेल्टर होम पहले बनाइए। तो अगर उसमें टाइम लगेगा तो गवर्नमेंट है, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती हैं कि हमने इतना काम करके दिखाया है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 6 हफ्ते के अंदर मांगी है, अब हमें थोड़ा और टाइम दीजिए। सुप्रीम कोर्ट देखेगा हाँ इन्होंने ईमानदारी से काम किया है, टाइम शॉर्ट पड़ रहा है इनको, तो इनको और थोड़ा सा हम टाइम दे सकते हैं। तो मैटर यहीं एंड नहीं हो जाता। मैटर ये होता है कि क्या ये मानते हैं कि अगर ये 10 लाख कुत्तों को सड़क पे रहने दिया, तो जो 2,000 कुत्ते रोज के काटते हैं, 60,000 दिल्ली के, और 60,000 कुत्ते काटते हैं एक महीने के, और 37 लाख जो डेथ होती हैं वो ऐसे ही होती रहेंगी, क्योंकि स्टरलाइजेशन तो होगा। स्टरलाइजेशन तो नया कुत्तों के होगा ना, जिनके हो गए उनका तो होगा नहीं, वो काटते रहेंगे। उसके बाद इन्होंने एक डिबेट और बड़ी अच्छी की है, ये कहते हैं नहीं वो इसलिए काटता है, जब मेटिंग करता है तब कुत्ता काटता है, जब बच्चों की सुरक्षा की बात होती है तब कुत्ता काटता है, या फिर टेरिटोरियल जो उनके डिस्प्यूट होते हैं उसके कारण काटता है। तो इसमें हमारा कसूर क्या है? काटता तो है ना वो, और जब वो काटता है तो या तो कुत्ते को बंद करना पड़ेगा आपको, और नहीं तो हम अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे। जैसे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बंद कर लिया है कि भाई बाहर मत निकालना, खेलने मत जाना पार्क के अंदर, कुत्ते हैं। लोग कैब हायर करते हैं सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए, इसलिए हायर करते हैं कि उस गली के अंदर कुत्ते बहुत हैं, कुत्ते उनको काट ना लें। नौकरानियां काम नहीं करने जाती अब गलियों के अंदर, सिर्फ इसलिए कि ये कुत्ते वाली गली है। मैं जब आरडब्ल्यूएस को देखता हूं तो सारी आरडब्ल्यूएस सुप्रीम कोर्ट के फेवर में है। इनसे कहिए एक आरडब्ल्यूएस ही दिखा दें जो ये कहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ठीक नहीं है, इनको शेल्टर होम नहीं भेजना चाहिए। Thank you for joining us, Urvashi and Dr. Sanjeev Bagai. We have Suhail Seth, author and columnist, joining us as well. Mr. Seth, the Supreme Court today has stressed that compassion must be balanced with public safety. How do you see this tension playing out? Should policy lean more towards protecting citizens or protecting the dogs? So it's an excellent question. It is no one's argument that citizens should be attacked or mauled or suffer through rabies. No one's argument. All those who've said that are now trying to push the dog lovers into an irretractable position. I have a very clear view, Marya, and I can speak only for myself. I don't speak for any lobby, any association, nothing. My wife and I have 8 indies who we've adopted. But obviously, they live with us. They are our family. There is the issue of dogs that are left unwanted and are on the streets. The solution that the Supreme Court has suggested is what I'm against. It is no one's argument that citizens should not be safe. So people are being stupid by saying, oh, that means you want children to be mauled. I mean, how stupid and how ridiculous. What we are saying is, can there be a more compassionate solution? Do we really need to round up all the dogs, put them in dog shelters or pounds? Because you and I know how this country works. I mean, who the hell are we fooling? These jokers can't get a drain right. You think they'll get shelters right? You will again have people who will use this to impound dogs, cart them away miles, and
That's it. This is typically the Indian way of administering. Operation successful, patient dead. So I have solutions. Number one, the RWAs that exist in Delhi, because Delhi is the center of this all. There are RWAs which today have community dogs. Why can't those RWAs create shelters? If they are unwilling to create shelters, then those dogs need to be moved out to shelters within proximity. The dogs need to be cared for, as does the safety of children or old people or anyone walking the streets. Now, let me give you an example. The law in India very clearly states that if you have a dog and you're taking the dog on a walk, if it's a domestic dog, let's say if it's cared for, then you have the dog muzzled. How has the stray dog population risen to what it has today? No vaccination, no neutering, no sterilization. Marya, these are the rascals, the MCDs of the world, who have allowed this situation to come up to such a pass. And now they want a nuclear bomb kind of situation. So let me re-emphasize. I am as concerned about any citizen being mauled or being, hurt by any dog, stray, domestic, whatever. About 10 days or 15 days ago, there was an incident in Gurgaon where a husky jumped onto a woman who was walking. The dog handler could not control the husky. And apparently, from the CCTV footage, it's no one's argument that the lady in question was in the wrong. But apparently, the lady tripped from the pavement to the road, from the curb to the road, and the dog thought it was coming to attack it and therefore lunged. I'm not defending the dog or, saving the woman's argument. There have to be humane solutions. This solution by the Supreme Court is not humane. A. B, it is not implementable. By their own logic, they have 1 million dogs, or 100,000 dogs that are stray. Do you think these people have the capability? Rekha Gupta and her band of loyalists can't sort out a goddamn spell of rain? Do you think they have the inclination, the intelligence, and the impassioned perspective to actually create shelters? So the argument is, who will take care of these strays, which we as a society have allowed? Because our goddamn municipal people, corrupt to the core, don't do any goddamn work, was supposed to be sterilizing or neutering these dogs, didn't do it. Now you've created a situation, you say, nahi bhai, now the only solution is extern them or exterminate them or move them to shelters where, Marya, let's be honest, you and I both know, and I'm sure even the judges have this level of, humanity and intelligence to know how the administration will start handling these dogs. Okay. So I think we need a middle path. I'm not the expert. There are many experts now. Let the experts weigh in. For the Supreme Court judge, Justice Pardiwala, to say, oh, I don't want any NGOs, I don't want any activists. That's not the solution. He's a very erudite judge. One would have expected more humanity, and more so because he's a Parsi. Okay. We have to find a solution. As simple as that. My question will also be to you, sir, that given your keen sense of social trends, do you believe that India's handling of the stray dog issue reflects a deeper failure in urban governance, or is it more about society's inability to build consensus on animal rights? No, I have full faith in India and Indians. I have zero faith in our urban infrastructure. Marya, I've said it even on your channel when I talked about Gurugram. We are pathetic when it comes to urban infrastructure. We are pathetic when it comes to enforcing laws. We are pathetic. Do one thing. Walk your dog in Hyde Park or in Central Park, and if the dog poops, you have to pick up the poop. Do you think anyone does it here? So we are equally to blame. But that's not the argument. The argument here today is not about blaming people. The argument is very simple. Can we find a more humane approach? A. B, can we ask organizations to set up large dog shelters? And there are many people who'd be willing. Marya, we haven't even scratched the surface.
Okay. There'd be many who would say that, yes, we will adopt. We will create a large dog shelter. So Okay. I'm not saying put your citizens in danger, but at the same time, don't be so inhuman about this handling. And we need that balance. And I All totally right. understand. All right, Suhail Seth, appreciate your time. Thank you so much for joining us on this edition of The Last Word. That's all from me. We are putting out this entire discussion on ndtv.com. Thanks so much for watching.